ask them to come here as soon as possible. We are going to start the session within 1 minute. Okay. Those who have come now, just settle down quickly. Yeah. So how was the lunch? It was good. हाँ? पेट भर के खाया? हाँ? सबने नहीं खाया लगता है, आवाज थोड़ा कम आ रहा है। खाया सबने? ये तो डायनामिक इवेंट तो अभी क्या सोने का? यस सर। अभी चला जाओ फिर। बोल दो यस सर अभी। इसके लिए तो आया तुम लोग यहाँ पे। चलो ठीक है। Okay. This won't be a calculating or designing session. Okay. So we will generally talk about what should be your primary criteria about driver selection and what should be your approach towards event. How should you strategize the event before going to event? Okay. Not on the event side. Okay. So if anyone is remaining to come, just call them and ask to come quickly. Okay, we are going to start within 2 minutes. नमस्ते भी आ गए हम सब रख के बैठे हैं। ताकि चाबी किसी के लिए One request for the volunteers from this state that please call the volunteers over the mess and ask every team members to come here. Okay. Okay, so let's start. Okay, we are running out of time. We are short of time. Okay, so let me introduce myself once again. My name is PRANAV KHATEKAR, and the reason why I'm here is to share my experience of my time where I was a driver. I was driving a buggy of my team for Bahai India 2019, Bahai India 2020, and Bahai Tennessee Tech 2019. Okay, so I will quickly recap all those movements and I will share my experience with you as a driver and as a team manager to set the strategies for them. Okay. So this presentation is all about the driver strategies, driver skills and strategies, how to select the driver for a team. So let's make it interactive. Can any one of you tell me that how one team should select the driver of their particular team? So what will be the process of doing that? Anyone can volunteer this question and answer, please. Can we pass the mic? Yeah, I will come now. So driving for choosing a driver, there are many different criteria for like if I say that first of all the basic skills of driving. First of all, number two is the weight of the driver. नंबर थ्री ये होना चाहिए कि जो ड्राइवर है उसको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों 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 चीजें उसको गाड़ी के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए जरूरी है। क्योंकि अगर कोई भी इवेंट में कुछ भी गाड़ी को कुछ होता है तो सबसे पहले ड्राइवर ही एक्सेसिव होता है या फिर ड्राइवर को पता है कि क्या हुआ है एटलीस्ट तो वो एक्चुअली कम्युनिकेशन करके बता सकते हैं किसी को।
So driver should know the basic knowledge of the car, including electrical as well as mechanical. So driving skills plus weight plus the knowledge of electrical plus mechanical, ये तीनों को मिला के driver selection होना चाहिए. Okay. And what if I tell you that these parameters are the least important while selecting a driver? So are you going to believe me? If not, I will quickly explain you within the next 10 to 15 minutes that what parameters should one team consider while selecting their driver. Okay. Because first of all, see, the driver which you are going to select to drive the vehicle is a single seater all-terrain vehicle. Okay. That vehicle will contain the automatic transmission, that is a one throttle pedal and one brake pedal. Okay. So learning that vehicle to drive and learning commercial vehicle is a way different one. Okay. You can teach anyone to drive this vehicle and get master in it within a span of, let's say, 1 month or 1.5 months. Okay, so let me take you quickly through the journey that what selection criteria one team should follow while selecting the driver. So there are two major parameters. Okay, first is the mindset of the driver, and second one is the skill set of that particular person. Okay, so while selecting a driver, please make sure that you will consider all these points. So in skill set, there are two major points. First is his or her analyzing skills, and second one is think before act attitude. So everyone know how event is going to take place, right? So first, analyzing skills are a must for one person to become a driver. Okay, आपकी पहले जो टीम्स रहेगी वो कुछ अटेम्प्ट्स लेगी सस्पेंशन एंड ट्रैक्शन के या फिर एक्सेलरेशन नॉट एक्सेलरेशन मैन्युवरेबिलिटी के. सो दूसरों की गाड़ी को जज करके खुद की गाड़ी कैसे बिहेव करेगी ये एनालिसिस उसको खुद के दिमाग में चलना चाहिए. सो ये स्किल्स उसमें होगा या नहीं होगा, हाउ विल यू क्रॉस वेरीफाई. तो उसके लिए कुछ आप बेसिक साइकोमेट्रिक टेस्ट सेट कर सकते हो, पर्टिकुलर पर्सन के लिए कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट सेट कर सकते हो. एंड दिस होल प्रोसेस नीड्स टू बी मींस डन at least 3 times. Okay, so there should be at least 3 psychometric tests, 3 aptitude tests from which one person needs to go finally before becoming a driver. Second is think before act attitude. Why this skill or this skill set is important in the person who is becoming driver? Can anyone tell me? Because the decision in a fraction of second that the one person is going to take will decide where your whole year's effort will stand out in the list of at least say 70, 80 teams. Okay, so I will briefly explain you this point afterwards. Okay, and the another part is the mindset of that particular person, that it should be calm, it should not panic. I've seen in last 5 to 6 years that driver are getting hypered by seeing the suspension and traction track, and drivers are saying that I'm not going to take the attempt, and if anything goes for the vehicle, I will be not responsible. So if this attitude one driver carries, that will be a most no-no for that person. Okay. And the second thing is eager to learn. Okay. He or she should not feel that this is his responsibility from day one, but it's interest or his or her interest. Okay. So eager to learn attitude is the main thing which we should look for in a person who wants to become a driver of the team, and not like बहुत सारी टीम्स का मैंने ऐसे देखा है कि मैं कैप्टन हूँ तो मैं ही ड्राइवर बन जाता हूँ, या मुझे गाड़ी चलानी आती तो मैं ही ड्राइवर बन जाता हूँ. सो गाड़ी चलाना आना और उस पर्सन का ड्राइवर के लिए लायबल होना, these two are different things. And never make mistake by choosing a right driver, because ultimately he or she will be the one who is going to take your team up on a certain level. Okay. So now you have selected a driver who has all this skill set and mindset. Okay, so what next? So next is the training of that particular person. Okay, because no one is perfect. So the training must be differentiated in the 3 parts. Okay, the first part is the physical training, second part is the technical training, and third part is the mental training. Okay, so in physical training, you can ask him to work out daily, because ultimately he needs to drive that particular buggy for 4 hours on the rough terrain. Okay, so he should be physically fit
There should be no physical breakdown throughout the course that will ultimately hamper your performance or your vehicle's performance throughout the race. Okay, that adrenaline not take him to the certain level where he should bring your team down. Okay, so physical training you got me. Then the next is technical training. Okay, so technical training, what I'm trying to say is that every departmental lead, okay, suspension lead, brakes lead, transmission lead, should sit alongside with the driver and explain him whatever things you have in your mind. Okay, so technically, the driver should be most technical person from your team. If he is not initially, it's each and every departmental head's responsibility to make him liable for that position. Okay, and the third thing is a mental training. This is the most important thing which every one of us neglect while we are in the testing phase. But the mental piece and the rethinking of everything. Show him the previous attempts of the various teams. Show him the international attempts like Cornell, RIT. उनके सस्पेंशन एंड ट्रैक्शन के रन्स उसके उनके मैन्युवरेबिलिटी के रन उसको दिखाओ उसको एनालाइज करवाने को लगाओ उसको ट्रैक दिखाओ और देन मेंटली उसको रीथिंक करने को बोलो और ट्रैक ड्रॉ करने को बोलो तो जितना मेंटल ट्रेनिंग आपके ड्राइवर का अच्छा होगा उतना आपका ड्राइवर बेटर परफॉर्म करेगा एट द टाइम ऑफ इवेंट ओके अभी आपने ड्राइवर चूज किया यू आर सिलेक्टेड वन ड्राइवर ओके यू आर ट्रेन हिम सो व्हाट नेक्स्ट so next is taking output from what inputs you are given. Okay, so उस ड्राइवर को ट्रेन करने के बाद बेनिफिशियली आपकी टीम को कैसे होगा तो इन तीन वेज में so first way to take output from that guy is the performance improvement. So he or she should understand your vehicle on that level कि उसको गाड़ी में बैठ के पता रहना चाहिए कि गाड़ी में क्या इश्यूज है गाड़ी का आरपीएम अगर आप चालू करते हो तो by the help of vibrations if your vehicle is M-power vehicle then vibrations के ऊपर से उसने बोलना चाहिए कि ये 1750 आरपीएम या 1815 आरपीएम इतने लेवल तक लोग ट्रेन होते हुए देखे हमने बाहर के इवेंट में एंड योर ड्राइवर मस्ट बी वन ऑफ देम इफ यू ट्रेन हिम अकॉर्डिंगली सेकंड वन इज ओन स्किल्स इंप्रूवमेंट अगर उसको व्हीकल समझ में आता है तो उसको एक टर्न मारने को बोलो सपोज एक कोन रख दिया एंड यू हैव आस्क्ड हिम कि मार्क 90 अबाउट दिस कोन ओके सो अंटिल एंड अनलेस वो परफेक्ट टर्न नहीं मारता है उसको बार बार मारने को बोलो 50 टाइम्स 100 टाइम्स 250 टाइम्स I remember when I was a driver, so I used to like do the training for at least 2.5 hours a day, continuously गाड़ी में बैठ के जिसमें 60 to 70 laps to and fro मेरे होते थे and एक टर्न मारने के लिए मुझे मेरे previous driver at least 70 to 80 times लगाते थे until and unless that turns go perfect. And इतना अगर प्रैक्टिस कोई बंदा करता है ना तो आप आंखें बंद करके उसको मनोरेबिलिटी इवेंट के लिए गाड़ी दे दो and he will excel that event. And the third thing is the durability improvement. So here all the Indian teams are lagging as of now. If some teams are going to participate in the international event, they will get to know that अगर international event में 100 गाड़ियां भाग रही है मतलब 100 गाड़ीज पार्टिसिपेट कर रही है तो उसमें से 90 vehicles are running on the endurance track with same fluency. इंडिया में क्या होता है 50 टीम्स अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें से 10 ही एंड्योरेंस भाग रही होती है बाकी सब एंड्योरेंस सर्वाइव कर रही होती है सो वी डोंट वांट टू बिकम सर्वाइवर फॉर द एंड्योरेंस वी वांट टू बिकम कॉन्करर फॉर द एंड्योरेंस एंड इन दैट वे योर बग्गी शुड बी मेड ओके सो जितना गाड़ी को तोड़ना है गाड़ी टूटेगी इसलिए टेस्टिंग नहीं करना है ये एटीट्यूड किसी ने रखना नहीं है गाड़ी को जितना तोड़ना है तोड़ो टेस्टिंग में तोड़ो so that event set पे आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो हर एक इवेंट में एक्सेल करेगा there won't be any hesitation for you guys or for the driver to take any critical turn or critical decision okay so ये हो गया ड्राइवर का ट्रेनिंग ड्राइवर सिलेक्शन एंड योर टीम्स इंप्रूवमेंट ओके तो ये सारी चीजें आपको कहाँ बेनिफिट करेगी so किसी कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी कि कितने मार्क्स का इवेंट रहता है कितने मार्क्स का इवेंट रहता है आउट ऑफ हाउ आप मैक्सिमम कितने पॉइंट स्कोर कर सकते हो एक ईयर में एनीवन सो दिस चार्ट यू मस्ट हैव सीन इन द रूल बुक हैज एनीवन सीन दिस
Okay, so this is grand total of 1100 marks in which there are 100 bonus marks. Okay, neglect that. There will be phase two. Phase two will be phase two VD for 125 marks. Phase two virtual statics will be for 200 marks. Phase one will be for 50 marks. And if you see, then the dynamic event score is ultimately sums up to 625 marks. And this is the reason why I was telling you why selection of driver is important, because these whole 625 marks, that person will bring you to your team. Okay, so that is the importance of selecting a good driver or bad driver. Okay, and ultimately by experience of this last 5 to 6 years, and by taking experience from my seniors or my fellow juniors, we have derived to the 9 mantras which will ultimately make you succeed for the Bahais India event. So these 9 mantras are divided into the three main domain categories. So the first domain category is competitor analysis part. Second main category is event site planning, and the third main category is vision, your team's vision. So under competitor analysis, there are three more points. Okay, the first point is for the teams who are returning teams in the Baha, that who have participated in previously in Baha, that previous year's competitors bracket. Take out the score sheet and check in which bracket you're following. If you're from the first to 10 or 10 to 25th or 25th to 100. Okay. So divide your means check in which bracket you are following and try to excel that bracket, try to be top of that for this year, okay? But try to excel this bracket and come to the next bracket. Means if you are falling in the bracket 3, try to bring your team to the bracket 2, or try to bring your team at the topmost position of bracket 3. Okay. The second part is the targeted scores for the current year's event. Okay. So ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको आप कहाँ पे स्टैंड आउट करते हो आपके करंट टाइमलाइन के हिसाब से। आपको स्टार्टिंग से पता रहना चाहिए कि मुझे पता है कि फेज वन में मेरे इतने मार्क्स आए, फेज टू में मैं इतना स्कोर कर पाऊंगा, तो इसके ऊपर से फेज थ्री के लिए मुझे क्या क्या सेट करना है, क्या क्या स्ट्रेटेजी सेट करनी है। एंड थर्ड इज परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ द कॉम्पिटिटर टीम। सपोज मेरी टीम XYZ है और मेरे साथ कम्पीट करने वाली है 3-4 टीम से जो मैंने मेरे हिस्से निकाली है, तो उनका कैसा प्रोग्रेस है, उनका किस वे पे अभी चल रहा है। सपोज मैन्युफैक्चरिंग इस पॉइंट पे ये 4 टीम से जो मेरी कॉम्पिटिटिव टीम से, तो ये पॉइंट पे किसका मैन्युफैक्चरिंग पे किस पॉइंट तक आया है, किसका मैन्युफैक्चरिंग पे मेरे से आगे चल रहा है, कौन मेरे से पीछे चल रहा है, ये साल भर के लिए आपको एनालिसिस करना होता है, not on the event day or event site. These all things are for the team managers or team captains who are present over here. Then second is event site planning. So according to me, most of the teams neglect the first 2 points. So unloading and registration is the most crucial part to start your event. Okay. So the event which has a great start will end up in a good manner only. That is for sure. So unloading or registration, make sure that registration के time तक आपका vehicle वहाँ पे present होना ही चाहिए। तो अगर registration suppose Monday को है, तो आपका vehicle वहाँ पे Sunday night या Monday तक होना ही चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है मंडे को और आपका व्हीकल उधर आ रहा है ट्यूसडे को, तो दैट विल अल्टीमेटली ruins everything which you have planned for the event. ओके, सो उसके ऊपर से आपका व्हीकल कब डिस्पैच होना है आपके कॉलेज से, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अल्टीमेटली टाइम मैनेजमेंट इज द ओनली की व्हिच every speaker can hear told. Okay, so I won't speak on that much. Okay, second thing is approach towards TI. So हमने बहुत सारे ऐसे टीम्स देखे कि जो परफेक्ट गाड़ी टीआई को लाना चाहती है, लाइक हमने गाड़ी लाया और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो अपने दिमाग से निकल जाते हैं या अपन एज्यूम करते हैं कि ऐसे हो गए, बट वो वैसे होते नहीं है। So there is a different level of thinking which the technical evaluation judges are having, and we understood it different way and we take it in another way, and there will be like if you decide, I mean if you think that there will be only 3 to 4 points which will get from the first round of the TI, ultimately the list go bigger and bigger. Okay, so first you must prioritize the thing, and आपको सबसे पहले ये काम करना है कि इवेंट सेट को अनलोडिंग होने के बाद आपका व्हीकल सीधा टीआई के लाइन में, इतने लेवल तक प्रिपेयर करके आपको आपका व्हीकल लाना है। क्योंकि क्या होता है कि डे वन को टीम्स प्रिपेयर ही करते रह जाती है, लाइक
3 थ्रेड्स का रूल है तो कट करो, बफ करो, मस्त से चमकाओ गाड़ी को, and ये करते करते आपका फर्स्ट डे निकल जाता है. You will bring your vehicle for the TA on the next day, and it ultimately ruins everything for the next 2 to 3 days. And the third is on-site management. On-site management, I'm trying to say is कि segregate करो work. I've seen that कि एक ही बंदा हर जगह पे भाग रहा है, कैप्टन हो, वाइस कैप्टन, मैनेजर हो, तीन ही बंदे सारे जगह पे भाग रहे हैं. किधर बुला है ये तीन बंदे जा रहे हैं, किधर कुछ अनाउंसमेंट है तीन बंदे जा रहे हैं. तो डोंट डू दिस. ओके, वॉकी टॉकीज विल बी द वन गुड वे टू मैनेज एवरीथिंग. ओके, एंड मैनेजर्स और कैप्टन्स ने ये चीज इंश्योर करने की यू विल अलॉट द टास्क टू ऑल द टीम मेंबर्स specifically. Okay, and you should not run at every place and try to get all the things sorted out. And the last but not least is your vision for your team. So first thing is goal for the next 3 years. Okay, आप भाग में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो योर विजन मस्ट बी आपके बाद का दूसरा या तीसरा टीम जो है वो भी पार्टिसिपेट करना चाहिए इवेंट में. योर गोल मस्ट बी दैट वे कि वो टीम जीतना चाहिए, और वो टीम जीतने के लिए आप क्या करोगे इस लेवल पे. That should be your thinking. Then the strong alumni network. Okay, so we have seen the pattern. Those teams who are consistently in top 10, the top 10. Okay, we have seen this. Those teams are having good alumni network. Okay, so इस एटीट्यूड से कभी भी बाहर टीम मत ज्वाइन करो कि एक साल के लिए करना है, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया फिर टाटा बाय बाय. It's your responsibility to carry on that legacy and अगले 2-3 साल के लिए आपका टीम जो है वो सस्टेन करे इवेंट में, and not only sustain, वो compete करे दूसरों के साथ और excel करे. ठीक है. And the last is we before you. Okay, so one good vehicle never leads to win the event, but one good team does always. Okay, so आपको अच्छा टीम बनाना है, अच्छा टीम बना आपका तो अच्छा व्हीकल अल्टीमेटली बनेगा ही और आप इवेंट जीतोगे. ओके, सो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन वी विल वेलकम. थैंक यू. तो इस